all, I hope everyone is doing great. Welcome to my channel, Green World Investor. Today we are going to talk about a tale of two investors. So guys, meet Reema and meet Suresh. Now Reema is more risk averse and she likes to keep it simple. She wants to invest in real estate, whereas Suresh is more aggressive and he loves the idea of generating higher returns from his portfolio. So Reema has went ahead and invested in real estate because she likes the idea of generating passive income through rentals as well as owning something physical like a real estate which you can see and touch. But Suresh, on the other hand, wants to have that potential for higher returns, and therefore he went ahead and invested in shares. Now both of them are arguing. Suresh and Reema, they are arguing over the fact that their investment choice is better than the other. So Reema is arguing that real estate offers, a better tangible physical asset, and the prices, unlike the shares, are not volatile. Whereas Suresh here is putting his point that in real estate you do not have a potential to earn higher incomes. The stock market has outperformed real estate over the long term. So, but at the end of their argument, both of them agreed that they should have some portion of their portfolios in both of the asset classes. So both of them went ahead and invested a part of their incomes into real estate as well as stocks. So yes, my friends, this is an ongoing debate in everybody's minds कि हमको किस में पैसे डालने चाहिए, शेयर्स में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट करें या किसी प्रॉपर्टी में पैसे को डाल दें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमको किस तरह से ये डिसीजंस लेने चाहिए और वो हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए टू मेक अ चॉइस बिटवीन रियल एस्टेट और पीपल आस्क मी वेदर इट इज अ बेटर चॉइस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और स्टॉक्स। सो इसका आपको एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। देयर इज नो ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन बिकॉज दिस इज अ पर्सनल चॉइस एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। सो बट इट इज बेटर टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर एसेट्स एंड हैव अ मिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू पुट इन योर पोर्टफोलियो। आप अगर सारे के सारे पैसे रियल एस्टेट में डाल दो या सारे के सारे शेयर्स में डाल दो तो वो आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए यू शुड हैव अ प्रॉपर मिक्स ऑफ बोथ रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स एज वेल एज सम पोर्शन ऑफ yours into fixed income generating assets like gold also. So yes, so there are a few constraints and there are a few pros and cons of real estate versus stock investing. So back to our questions back to the choice between Reema and Suresh's choice. So let's see stock investing or real estate, which one's better. So let us examine stocks and real estate under these following factors. So returns and volatility. So yes, अगर आप स्टॉक्स में पैसे डालें तो आप देखें कि स्टॉक्स जनरली गिव अस अ हायर रिटर्न व्हेन कंपेयर्ड टू रियल एस्टेट। और पास्ट परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स की बेटर हुई है देन रियल एस्टेट। लेकिन वोलेटिलिटी भी ऑन द अदर हैंड स्टॉक्स में ज्यादा रहता है। आप देखो तो कोई भी स्टॉक मार्केट 50% 40% ऊपर नीचे जा सकता है, पर रियल एस्टेट में ये जो डेविएशन है ये 10% से ज्यादा नहीं होता। तो आइदर वेज इट विल गो अप और डाउन जनरली अराउंड 10%। तो यस, अगर आप स्टॉक्स का रिटर्न्स हायर के लिए जाना चाहते हैं तो वोलेटिलिटी भी उसके प्राइसेस में हाई होगी, ये बात आप अपने ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो ये आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप 100 रुपए तक की शेयर्स ले सकते हैं, 500, 1000 या एक्स्ट्रा फंड्स है तो और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो ये इन्वेस्टमेंट साइज लाखों करोड़ों में ही हो सकती है, उसके नीचे आप नहीं जा सकते। सो डिपेंडिंग अपॉन द availability of funds with you can make a choice. You can take a pick between stocks and real estate, because this is also one of a driving force when we are going to invest in assets for our portfolio. Whenever we are building a portfolio, we need to see what is the initial size of investment, what is our budget, and what are our needs to go for it. So yes, size of investment is smaller in case of shares, whereas it is huge in case of real estate. अगर हम तीसरा फैक्टर देखें तो लिवरेज। आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी बैंक में जाकर एक लोन ले सकते हैं, और आज के दिन लोन्स काफी रिलेटिवली चीपर भी है टू गेट इनटू अ रियल एस्टेट बाइंग। लेकिन वो शेयर्स के लिए वो ऑप्शन नहीं होता। टू बाय शेयर्स यू जनरली कैन नॉट गेट लोन्स। सो व्हाइल यू कैन प्लेज योर शेयर्स, यू कैन क्लेम लोन अगेंस्ट योर शेयर्स, लेकिन उसमें आप देखें तो उसकी रिटर्न प्रोफाइल उतनी ग्रेट नहीं होती और उसका कॉस्ट भी बहुत हायर होता है। सो आप अगर रियल एस्टेट के लिए जाना चाहें तो आप आराम से एक लोन अवेल कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस व्हेन यू आर गोइंग फॉर बाइंग इन शेयर्स। अवेल द लोन एट द राइट टाइम एंड गेट इनटू अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एट द राइट टाइम, you might end up
getting a 3 digit returns to your investment. So yes, the choice is yours. अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें तो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर पीपल हु आल्सो गो इन स्टॉक्स इज बिकॉज इट ऑफर्स अस अ गुड डाइवर्सिफिकेशन. आप किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू देयर स्टॉक्स. तो इसमें आपका कुछ भी एक लिमिटेशन नहीं होता कि आपने एक स्पेसिफिक सेक्टर में डाला हो. आपको लग रहा है फार्मा का बेटर प्रोस्पेक्ट्स है तो आप फार्मा में डालो, अगर आपको कम्युनिकेशंस में लग रहा है तो आप उसमें डालो, अगर आपको यूपीएसयूज में डालना है आप उसमें डालो. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द businesses they are working it, and you can make a choice. So जरूरी नहीं है आपने बस एक ही में डाल दिया, आप डाइवर्सिफाई करो, आप स्टॉक थोड़ा इसमें डालो थोड़ा उसमें डालो. So that flexibility is available to investors if they are going to invest in shares, but that is not the case with real estate. अगर आपने एक जगह अपनी पैसे कोई प्रॉपर्टी में आपने डाल दी तो वहां आपके पैसे रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि as we already discussed, real estate involves a huge investment और फिर उसमें से आप आराम से निकल बाहर अंदर बाहर नहीं कर सकते. तो another here the other difference comes is liquidity. तो shares काफी liquid होते हैं, आपको जब मन आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो, आप you can buy and sell shares easily, but that again that flexibility is not available in case of real estate. आप it is not very easy to find a buyer of your property if you are willing to sell, or easily you can easily shares can easily be bought and trade, but that is not the case in for real estate. So transaction cost is higher when you're buying a property. आप इसमें जब भी आप buy sell करते हो तो आपको around 8 to 10% brokerage and taxes लगता है. While for stocks it is very less. Stocks are very liquid on and they are easily tradable on the stock exchange. और जो बड़े कंपनी के shares होती हैं मतलब बहुत transactions होते हैं इनमें. तो इस केस में जो bid ask होता है, जो spread होता है between what your asking prices and the seller's selling prices is very low in case of share trading. तो इस वजह से जो transaction cost होते हैं वो हमारे shares में कमती होते हैं when compared to a real estate. So whenever you are buying a real estate property, other than the property price that you see, there are a lot of brokerages and taxation involved. There are a lot of hidden costs like this which you must be aware of, you should be aware of before investing in a property. So ये हो गया हमारा liquidity and transactional cost in case of both these assets, which is very different. अब हम बात करते हैं long term returns. तो अगर आपने shares में पैसे डाले होते, generally it is seen that the share performance, the share returns from stock markets have outperformed those of real estate returns. लेकिन अगर आप इस रिटर्न का इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो यू विल सी दैट दिस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज नॉट वेरी डज नॉट डिफर, डज नॉट हैव अ लार्ज मार्जिन व्हेन कंपेयर्ड टू रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट और स्टॉक्स में अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखें तो उतना डिफरेंस नहीं है, बट अगर आपने कोई इंडेक्स का देखा हो रिटर्न्स तो यू विल सी दैट इट बीट्स द रियल एस्टेट रिटर्न्स बाय अ ह्यूज मार्जिन. सो नॉर्मली you won't find real estate market crashing by 40% whatever happens. लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में देखें तो ये it is very it can happen, it has happened over in every decade. एक ना एक बार ऐसा होता ही है which I can see from my experience. So it is normal in case of share market कि ये ऊपर नीचे चलता रहता है, but this is not the case in case of real estate. The value of real estate property will generally appreciate over time, but we cannot say the same for shares. Another cost in the form of owning a real estate property is maintenance and security. अगर आपके खुद की एक प्रॉपर्टी है तो आपका आए दिन उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, या तो कोई दीवार में प्रॉब्लम है, या कोई पाइप में प्रॉब्लम, या इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, वहां लीकेज, यहाँ सीपेज. तो लॉट ऑफ मेंटेनेंस वर्क इज इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ whenever you're holding any physical asset, especially a real estate. In the west तो बहुत बार ऐसा encroachment का भी issues होता है, तो security related भी आपका concern रहता है. If you are staying in a different city and you are having a property in a different city, God only knows वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार पहले ऐसा होता था कि जो लोकलाइट्स होते थे they would encroach the property. और हमारे यूपी में भी एक ऐसे अंसारी साहब थे who was a dabang and who would extort people out of their real estate property. So हाँ ये इस टाइप के cases भी होते हैं when you are owning a physical asset in the form of real estate, but that is not the case for shares because वो आपके डीमैट फॉर्म में रहते हैं और वो आपके सेफ रहते हैं. So that is another difference when you are having this maintenance and security का पंगा रहता है whenever you are holding a real estate property. Next point is inflation hedge. अगर आप देखें तो दोनों shares और real estate are provide a good deal of amount of inflation hedge to your portfolio. लेकिन अगर आप real estate में देखें तो वो आपको ये better inflation hedge provide करता है. Like gold, real estate is a physical asset और उसकी value appreciate करती है over the time. तो ये आपका जो real gains होता है ये real estate और physical assets like gold में आपको better दिखेगा when compared to a share that you are holding. So better inflation hedge in case of real estate when compared to shares. And last on my list is accessibility. जी हाँ,
एक्सेसिबिलिटी आप देखें तो आपको शेयर ट्रेडिंग में बेटर है. यू कैन ट्रेड इन शेयर्स फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम्स. यू डू नॉट इवन हैव टू कॉल योर ब्रोकर और यू हैव टू गो आउट, स्टेप आउट एंड डू एनीथिंग. लेकिन ये आपके रियल एस्टेट में नहीं है. एक तो आपको यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यू वांट टू गो एंड सी द प्रॉपर्टी बिफोर साइनिंग द डील. नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी इन द सेंस कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन भी हो पर आप दूसरे स्टेट में भी करना चाहो तो कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन होता है, लाइक द हिली एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेयर they will not welcome an outsider to come and invest. और या तो उनके कुछ और एक the size of investment पे भी restriction होता है. So there are different issues when we are investing in a real estate property when it comes to accessibility. लेकिन अगर आप shares में invest कर रहे हैं तो ये सब कोई माथा पच्ची नहीं है. आप आराम से अपने shares पे पैसे डाल सकते हो. तो ये real estate के ये सब कुछ cons हैं जो restrict करते हैं एक investor को to go ahead and put their money in real estate. इसलिए आजकल REITs बड़े popular हो रहे हैं even in our country, and we have a lot of REIT units that are trading. तो अगर आपको रियल एस्टेट के पंगों से बचना है और शेयर ट्रेडिंग की कन्वीनियंस चाहिए तो REIT offers a very good option for all those beginners who are starting to look into real estate as an investment option, क्योंकि it will give you the best of both the worlds. तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है on REITs in India. वो वीडियो आप जरूर देखिए. You can check it out in the suggested link above. Also, that to have a synergy effect for both of these asset classes, you can invest the rental passive income that you earn out of your real estate property. वो rental income को आप as SIP stock market में डाल सकते हैं in your favorite shares that you are interested in. तो ये एक synergistic relation भी हो जाएगा और दोनों में आपकी investments भी हो गई हैं और दोनों इनकम भी अच्छे से कॉन्फ्लुएंस में आ गया है. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. तो फ्रॉम माय साइड इन कंक्लूजन आई विल ओनली से कि अगर इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, नो वन साइज विल फिट ऑल. सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होते हैं. सो इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन आपको एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पे देना चाहिए. तो मेरे विचार से आप दोनों में पैसे डालें, ना कि सिर्फ एक्सट्रीम में नहीं जाएं कि सारे के सारे पैसे इक्विटी मार्केट में डाल दिया या सारा का सारा रियल एस्टेट में डाल दिया. तो वो नहीं होना चाहिए. Do a proper mix of your assets and go and invest in both of them. So that was all from my side. I hope you liked the video and I hope Reema and Suresh are happy with their investment choice. So that was all from my side. I hope you like my video. अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें. आई एम न्यू टू दिस वर्ल्ड, so please show me some love. तो सब्सक्राइब करने के लिए you have to click on this green globe and you can easily subscribe. So that was all from my side. I hope to see you again. Bye and have a nice day.